Hi all of you, welcome to your social science guide channel. Today I will discuss the resource planning process in detail. So in the last class I told you that the resource planning is a complex process. Why it is a complex process? Because it involves three steps. What are these three steps? The number one step is identification and inventory of resources. Second step is evolving a planning strategy or structure, and third is making the resource development plans, matching the resource development plans. Now, what is identification and inventory of resources? Identification and inventory of resources refers to the process or the step in which you identify the type of resource through various methods like survey, like mapping, quantitative and qualitative estimation. Now, in evolving a planning strategy or structure, you try to develop its technology, the type of skill it required, and the type of institution it required. Next, matching the resource development plan. In matching the resource development plan, you match the resource development with the overall national development plan. That you see कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट हो रही है उससे ना कोई एनवायरमेंटल हार्म हो, ना सोशल हार्म हो और ना ही इकोनॉमिक हार्म हो, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ all these three. If there is a problem in social, economic or environmental category, then the development cannot be take place. So now I will discuss each step in detail. So you can copy this table and you can also copy the details which I am writing here. Okay. So let's discuss the first step. Let's discuss the step number 1. What is step number 1? Step number 1 of resource planning is inventory and identification, or you can write vice versa, identification and inventory. Identification of the resources. In this, we identify the resources with various methods like, first of all, we have the survey method. Survey method. What is survey method? We try to find out the information about the resource. जैसे कि रिसोर्स जो है वो कहाँ से मिलेगा, उसकी क्वालिटी कैसी, उसकी टेक्सचर कैसा है, उसका कितनी क्वांटिटी में मिलेगा या कितने सालों में खत्म हो जाएगा, या इससे हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट इज द सर्वे. वी ट्राई टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्स. देन वी हैव डन सर्वे. देन वी ट्राई टू मैप इट. मैपिंग. देन इन मैपिंग वी ट्राई टू लोकेट कि अगर हमें रिसोर्स एक पर्टिकुलर जगह पे मिला है तो ऐसा रिसोर्स और कैसी कैसी जगह पे मिलेगा. उससे क्या होगा, हमें प्लेस का भी पता चलेगा कि ये जो टाइप का रिसोर्स है ये इन स्टेट्स में इसलिए मिलता है क्योंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा है या वहां की सॉइल ऐसी है. सो एक रिसोर्स को आइडेंटिफाई और उसको इन्वेंट करने के लिए सबसे पहले हमें सर्वे करना पड़ता है. देन वी डू मैपिंग and the last is quantitative and qualitative estimation. In qualitative and quantitative estimation, we try to identify quantity. What is quantity? कि ये हमारे पास कितने सालों तक अवेलेबल है, या ये कितने सालों में रिप्लेनिश हो जाएगा, या कितने सालों में खत्म हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास कितना है रिसोर्स. दैट इज द क्वांटिटी. क्वालिटी. इन क्वालिटी वी फाइंड आउट कि रिसोर्स का टेक्सचर कैसा है, रिसोर्स का कलर कैसा है, या रिसोर्स से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, या रिसोर्स से क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. सो दिस इज द क्वालिटी एस्टिमेशन ऑफ द रिसोर्स. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड स्टेप. व्हाट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग? The second step of the resource planning is the second process of the resource planning is the evolving the planning strategy or the program. Evolving
the planning strategy or structure. In this we tell कि जो भी हमने रिसोर्स आइडेंटिफाई किया है और जो भी रिसोर्स हमने इन्वेंट किया है उसके लिए सबसे पहले हमें कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या हमारे पास उस रिसोर्स को एक यूजफुल थिंग बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है या हमें वो टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज हम देखते हैं क्या हमारे पास स्किल है, क्या हमारे पास ह्यूमन लेबर है उस रिसोर्स को एक यूजफुल चीज बनाने के लिए, और क्या हमारे पास कोई ऐसे ह्यूमन, क्या ये रिसोर्स ऐसा है कि जिसके लिए हमारे पास ऐसे ह्यूमंस हैं जो उस रिसोर्स का यूज निकाल के उसको टेक्नोलॉजी के हेल्प से एक यूजफुल थिंग बना सकता है। लास्ट थिंग हम इसमें देखते हैं इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन, कि क्या हमारे पास जगह है कि हम टेक्नोलॉजी और स्किल यूज करके एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक यूजफुल थिंग बना सकें। So this was the evolving the planning strategy or the structure. Now जो last step है, जो step 3 है, the step 3 is what we call matching the resource development with overall national development. In this we will talk about कि जो हमने रिसोर्स डेवलप किया है या जो रिसोर्स हम डेवलप करने वाले हैं उससे नेशनल डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है। नाउ नेशनल डेवलपमेंट में अगर हमें कंट्रीब्यूट करना है तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है एनवायरनमेंट, कि जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं और जो उस पे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उससे कहीं एनवायरनमेंट को तो हार्म नहीं हो रहा। एनवायरनमेंट के बाद हम बात करते हैं सोशल की। सोशल मीन्स कि कहीं हैव्स और हैव नॉट, पुअर और रिच के बीच में गैप तो नहीं बढ़ा रहा। एंड थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मीन्स कि ये कितना हमारी कंट्री में मनी ला रहा है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इकोनॉमी इसलिए बात नहीं करी क्योंकि in everything in resource planning strategy we indirectly are talking about the sustainable economic development. So we have to include the environment first, then social, then economic. I think it is clear to you. Now next एक बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक है आपके चैप्टर में, वो इतना आता नहीं है पेपर में, बट वी हैव टू डू दिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म। इफेक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म और कोलोनाइजेशन। व्हाट इज कोलोनाइजेशन? कोलोनाइजेशन इज कॉल्ड रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। कोलोनाइजेशन इज रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। सो इसमें आपको ये बताना है कि शुरू से रिसोर्सेज की डेवलपमेंट हमारी कंट्री में कैसे रही। तो उसमें ब्रिटिशर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैज रूल्ड अस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो हमें रिसोर्सेज की नॉलेज, रिसोर्सेज को यूज करने की नॉलेज कहाँ से मिली? ब्रिटिशर्स से मिली। सो इफेक्ट्स ऑफ कोलोनाइजेशन इन दिस वी विल टॉक अबाउट कि ब्रिटिशर्स को क्या फैसिनेटिंग लगा इंडिया में, जो उन्होंने इंडिया पे रूल किया, उनको फैसिनेशन लगा वहां के रिसोर्सेज से, कि इंडिया इज रिच इन द रिसोर्सेज बट इट्स पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स रिचनेस, दे आर फुलिश पीपल। सो we can use the technology and convert these resources into the useful things and make these people realize that their country is rich in resources. So Britishers ने resources को कैसे usable बनाया? Through technology. And using this technology, they showed their supremacy on us. Supremacy मतलब कि they show their intelligence on us. कि हम टेक्नोलॉजी यूज करके आपके रिसोर्सेज को एक यूजफुल चीज बना रहे हैं। सो वी आर शोइंग आवर सुपरमेसी टू यू।
So in effects of colonization, we are talking about what was the role of Britishers in giving the knowledge of the resources of our country to us. So the Britishers were interested in India only because of the availability of rich resources which were Indian people were not aware of. So they use their technology. They have one advantage to show their supremacy and to use the resources is the technology. Nobody has technology at that time. Only the Britishers has the technology at that time. So they use their technology to convert the resources in the useful things and showed their supremacy on the Indian people or the rest of the world. So this is the effect of colonization. So इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि अगर हमें किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट लानी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए वी हैव टू बी डिपेंड ऑन 4-5 things, not the resource only. So the economic development of a country requires क्या क्या चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. सबसे पहले एक रिसोर्स चाहिए, लेकिन रिसोर्स इज नॉट इनफ इन इटसेल्फ. अगर रिसोर्सेस चाहिए तो रिसोर्सेस के साथ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो उन रिसोर्सेस को कन्वर्ट करके एक यूजफुल थिंग बनाएगी. अगर टेक्नोलॉजी है तो स्किल होनी चाहिए. स्किल मींस कि उस रिसोर्स को अगर टेक्नोलॉजी से यूजफुल थिंग बना दिया तो उसको यूजफुल थिंग किसने बनाया? स्किल ने. स्किल हियर इज ह्यूमन रिसोर्स. और यूजफुल और रिसोर्स को यूजफुल थिंग बनाकर उसको यूज कौन करेगा? ह्यूमन. सो एंड द लास्ट थिंग जो रिसोर्स डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन फैक्टर होता है वो होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. Historical background of a country. For example, the historical background of our country were the Britishers. So, क्योंकि Britishers introduced the technology in our country, and in today's world, with the knowledge given by Britishers, we are using technology to convert resources in the useful things with our human resources because of the historical background of our country. I think this small topic is clear to you. So in conclusion, I want to say that कि एक कंट्री की रिसोर्स डेवलपमेंट, एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिर्फ रिसोर्स जरूरी नहीं होता. रिसोर्स के साथ उसकी टेक्नोलॉजी यूज जरूरी होती है. टेक्नोलॉजी के साथ स्किल जरूरी होती है. स्किल के साथ एक कंट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसने उस रिसोर्स को या उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, कैसे वो चीज इंट्रोड्यूस हुई. अब इसमें एक और चीज रह गई है वो institution. Institution is also important to develop a resource. What is institution? कि आप वो resource कहाँ develop करोगे? If you will develop in the factories or industry, so institution is that place. So I am concluding the class with the summary. So what I have been जो भी मैंने इस क्लास में बात करी है उसका मैं आपको एक बार कंक्लूजन बता रही हूँ कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा. So we have studied today first the process of resource planning. In process of resource planning, we talked about 3 steps, which makes it a complex process. The first step is identification and inventory of resources, in which I talked about surveys, mapping, quantitative and qualitative estimation. Survey is to identify the resource, to know about the resource. Mapping is to locate the resource, and these are the quantitative and qualitative estimation. Quantitative means कि हमें वो resources कब तक मिलेगा, कितने quantity में मिलेगा. Qualitative is what is the texture of the resource and what we can make from that resource. Next step, we have talked about evolving a planning strategy or structure. In this, I have talked about the technology, skill and the institution. कि अगर हमने रिसोर्स को डेवलप कर लिया है तो उसमें कैसी टेक्नोलॉजी लगेगी, उसमें स्किल, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे लगेंगे, एंड लास्ट इज इंस्टीट्यूशन कि वो रिसोर्स कहाँ डेवलप होगी, एक यूजफुल थिंग बनेगा.
Next step I have talked about matching the resource development with the overall national development कि जो भी हम रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट में. एंड नेशनल डेवलपमेंट किस पे बेस्ड होती है? सोशल, इकोनॉमिक एंड द एनवायरमेंट. सो this is the resource planning process. It consists of 3 steps which makes it a complex process. Next thing that I taught in this class is that effect of colonization. कि colonization का क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे रिसोर्सेज. इफेक्ट ऑफ colonization. What is colonization? The rule of the Britishers. So Britishers introduced technology in our country to convert the resources into the useful things. And why they invaded our country? Because they found that our country is rich in resources and the Indian people themselves don't have the knowledge about this. So by using the technology they converted the resources and showed their supremacy. So we conclude that कि इकोनॉमिक और रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए we need सबसे पहले the resource, then after resource we need technology, then after technology we need human resource or the skill, then we need institution. एंड इन सब का जो मेन फैक्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल in our country the historical background was the arrival of the Britishers who introduced technology in our country. I hope this class is clear to you. Please like, subscribe and share the videos so that other 10th can also get the latest information. So please like and share. Thank you.